Good morning, students. Okay, so once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. When we have started chapter number 5, agriculture. Okay, so some of the students have asked, actually, they have told that we have not covered geography chapter number 4, agriculture. Okay, so I think we have covered this during the lockdown period when we were discussing through the WhatsApp. Okay, तो मुझे जहां तक ध्यान है कि हम लोगों ने जब हम लोग WhatsApp के जरिए पढ़ाई कर रहे थे, है ना, जब हम लोग WhatsApp के जरिए पढ़ाई कर रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर. ठीक है, परंतु फिर भी some of the students have doubt in this chapter, so I think that the chapter is comparatively small, so we'll try to cover it in 6 or 7 live classes. ठीक है, अपन 6 या 7 लाइव क्लासेस में इसको कवर कर लेते हैं. Got it, beta? Okay, so let us start the chapter 4. Okay, in geography. So the chapter number 4 in geography is agriculture. So in this chapter we are basically discussing only about agriculture. In this chapter we will discuss the different types of agriculture based on how the agricultural practices are done. इसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का सेंस यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर यानी खेती किस तरीके से की जाती है, उसके बेस पर एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स. ठीक है, देन हम बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे. हम लोग बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. समझ में आया? सो वी विल डिस्कस अबाउट वीट, राइस, कॉटन, शुगरकेन, मिलेट्स. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट pulses. Apart from that, we'll also discuss about the plantation crops and the beverage crops. Okay, now beverage or beverage crops means those crops which are being used to prepare any item which could be drink. ऐसा आइटम जिसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं. दैट इज व्हाट बेवरेज आइटम्स. उन्हें क्या कहेंगे हम, बेवरेज या बीवरेज. ठीक है, गॉट इट? ओके, सो दैट इज व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस. इसके बाद जो हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन होगा, उस लास्ट सेक्शन में हम इंडिया में एग्रीकल्चर की कॉमन कंडीशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें कहां से पढ़ने को मिलेगा, फ्रॉम यूएसए. बेसिकली वो जो लास्ट सेक्शन है उसमें हम इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसे किसके साथ कंपेयर करेंगे, यूएसए में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ कंपेयर करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है और यूएसए में एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन है. ओके, नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ठीक है, परंतु उस एग्रीकल्चरल सिस्टम के शुरू करने से पहले, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन राइट नाउ. ठीक, जो हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है, द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, जो हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है वो किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, गॉट इट? जो हमारे चैप्टर की शुरुआत है वो किससे रिलेटेड है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड.
So there are three types of economic activities. I am again repeating, there are three types of economic activities. What are these three types of economic activities? So the first type of economic activity is called as what? Primary activities. Okay. So what is the first type of economic activities? Primary activities. Okay. Then the second type of activities are secondary activities, and the third is a tertiary activities. Okay. So we'll discuss a very small portion in short about these three types of activities. Okay. So these activities are these activities are connected with these activities are connected with okay, so these activities are connected with extraction, and these activities are connected with extraction and production of natural resources. Okay, now this is the most important thing. Okay, what is it? Primary activities. So what are the primary activities? These activities are connected with extraction and production of natural resources. ठीक है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होगा? ह्यूमन बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालेगा, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट मतलब वस्तु, तो किसी भी वस्तु, चाहे वो हमारे खाने के लायक वस्तु हो, सामान है, या फिर कोई मेटल है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो कोई भी वस्तु की जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगी बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं? ओके, वी आर ईटिंग ब्रिटानिया बिस्किट्स, है ना? हम लोग क्या खा रहे हैं? मान लो ब्रिटानिया का केक या बिस्किट खा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटानिया का केक और बिस्किट क्या हो गया? हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, परंतु क्या ये बिस्किट डायरेक्टली हमें मिल गया? नहीं। ठीक है, बेसिकली बिस्किट्स या ब्रिटानिया का केक बनने की शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, है ना? इसकी शुरुआत कहां से हुई? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। सबसे पहले व्हीट प्रोड्यूस हुआ, फिर उस व्हीट को क्या किया गया? ठीक है, ग्राइंडेड इनटू फ्लोर। The wheat was grinded into flour। उसका क्या बनाया हमने? आटा बनाया। ठीक है, then it is again processed। It is again processed to make cake।
क्या किया हमने, प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बनाया, केक बनाया। ठीक है, तो फिर से प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद क्या बना, केक बना। ठीक है, केक के बाद में ये केक हमने कहां से खरीदा, वी हैव परचेज्ड, ओके, परचेज्ड फ्रॉम शॉप। ठीक, अब इस पूरी प्रोसेस में यदि हम केक की बात करें, है ना, कि केक इज अ प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग, ओके, सो इस केक के प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। पहला स्टेज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो व्हीट कहां से प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर से। व्हीट कहां से प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर से। तो इट इज व्हाट, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक, अब व्हीट प्रोड्यूस हो गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राइंडेड इनटू फ्लोर, एंड देन अगेन प्रोसेस टू मेक केक। तो ये जो दोनों स्टेप हैं ये क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज में बेसिकली क्या होगा, जो प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोडक्ट मिला है, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करेंगे, जो प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, है ना, क्या होगी, प्रोसेसिंग। तो पहली प्रोसेसिंग क्या हुई, ग्राइंडेड इनटू फ्लोर एंड देन अगेन प्रोसेस्ड टू मेक केक। ये दोनों हो गया, गॉट इट। नाउ दिस इज व्हाट, सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके बाद हमने क्या किया, उसको शॉप से परचेज किया। ठीक है, हमने उसको कहां से परचेज किया, परचेज फ्रॉम शॉप। तो परचेजिंग क्या हो गया, टर्शियरी एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज हाउ द प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज आर देयर। ओके, so what is the primary activity beta, these activities are connected with extraction and production of natural resources, got it। Then second is secondary activity। Okay, now what is secondary activity? So these are connected with, these are connected with the, okay, these are connected with the processing of, okay, what are the secondary activity, so these are connected with the processing of product obtained from, okay, so these are connected with the processing of product obtained from प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, ऑन होम दीज आर, ओके, सो द सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज। सो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो चीजें मिली उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। नाउ व्हाई द प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज almost all the products that we get from the primary activities are not in a final usable form। लगभग सारे प्रोडक्ट जो हम कहां से प्राप्त करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज से प्राप्त करते हैं, वो किस में नहीं होते, यूजेबल फॉर्म में नहीं होते।
गॉट इट? इसलिए क्या करेंगे, ओके, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि प्रोसेसिंग के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो. सो दैट इज व्हाट द सेकेंडरी एक्टिविटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्शियरी एक्टिविटी. Okay, now, so what are tertiary activities? Okay, so tertiary activities provide support to primary and secondary sector through services. Okay, so these are basically service provider. So these are basically service providing activities. तो टर्शियरी एक्टिविटीज कौन सी हैं? वो सारी एक्टिविटीज जिसमें कोई मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस. तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन में कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ. ओके, ट्रांसपोर्टेशन में कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ. गॉट इट? सिर्फ क्या हुआ, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उस प्रोडक्ट को सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर किया. ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के लिए किसकी जरूरत है? बैंकिंग सिस्टम की. ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग. ओके, इसी तरीके से व्यक्ति की यदि तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य खराब हुआ तो डॉक्टर. ओके, we are teaching you people, so all these activities are what? Tertiary activities. यानी tertiary activities वो activities हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही हैं. ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सारी एक्टिविटीज में कोई मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट, ऐसी वस्तु प्रोड्यूस नहीं होती जिसका वजन तोला जा सके. सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओनली क्या? सर्विसेज. ओके, जैसे मान लो कोई एक फैक्ट्री क्या कर रही है? डस्टर प्रोड्यूस कर रही है. तो डस्टर इज ए मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट. डस्टर इज ए मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट. गॉट इट? सो वी कैन से दैट कि जो इंडस्ट्री डस्टर प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज व्हाट? सेकेंडरी एक्टिविटी. वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी एक्टिविटी. ठीक, आप कंडीशन अब चेंज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, है ना. तो मैंने उस कंपनी से डस्टर खरीदे और उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां भेज दिया? चंद्रपुर शहर भेज दिया. अब इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में कोई नया मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हुआ. फैक्ट्री में भी वो डस्टर ही था, चंद्रपुर आने पर भी वो डस्टर ही रहा. ठीक, वो डस्टर शॉपकीपर के पास गया तो भी सामान में कोई चेंज नहीं आया. वहां भी डस्टर था, यहाँ भी डस्टर है. शॉपकीपर ने फाइनली सेल कर दिया तो भी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया. ओनली क्या हुई? सर्विसेज प्रोवाइड हुई. ओके, सो द टर्शियरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. Got it? Okay. Now, as far as concerned about our syllabus, this is only the portion related to primary activity, secondary activity and tertiary activity. ठीक है, अभी हमारे 8th क्लास के सिलेबस के हिसाब से ओनली इतना ही इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में है. When you will be in 9th standard next year, okay, then जब आप लोग अगले साल 9th स्टैंडर्ड में होंगे तब यू विल बी हैविंग वन मोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. ठीक है, आपको एक और सब्जेक्ट आएगा इकोनॉमिक्स. तो उसमें आपको बहुत ब्रॉड मैनर में, ठीक है,
पढ़ने को मिलेगा what are the primary activities, what are the secondary activities and what are the tertiary activities. ठीक है बेटा? So that's all as far as concerned about right now our syllabus. ठीक है? So the next thing that we are going to discuss is about agriculture. Okay, so just wait for a minute, let me write the topic, then we'll start the discussion on this. Okay, so now we are going to discuss one more topic, that is agriculture and associated activities. Okay, so agriculture and associated activities. So what is agriculture? Okay, as we have discussed, it is the first stage of production. Okay, so agriculture is a primary economic activity. Agriculture is a primary economic activity. Okay, now what are the things included in agriculture? Okay, so agriculture includes growing of crops. Okay, then production of fruits. For example, the production of orange, banana, okay, and sorry, many other fruits. Okay, then apart from that, the production of vegetables, flowers, and rearing of livestock, पशुपालन वगैरह, ये सारा किसमें इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर में. ओके, सो एग्रीकल्चर इज ए primary activity. Agriculture is a primary activity. Okay, now what are the other activities? Okay, that is how many activities are involved within the agriculture. Okay, so what are the things involved? Production of crops, then fruits, production of vegetables, then production of flowers. Okay, production of flowers and rearing of livestock. Okay, now I think you would be able to understand the meaning of all those things except the livestock. Okay, now livestock means rearing the animals. Okay, rearing of animals, okay, which are being used for the different purposes. Okay, so the rearing of livestock also falls under the agriculture and associated activities. Got it? As far as concerned about the world, so 50% population, 50% population of the world. Okay, 50% population of the world engage in agriculture. It means world की 50% population, वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन, वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. ओके, नाउ कम ऑन टू इंडिया. सो इन केस ऑफ इंडिया, अराउंड 66% population,
In case of India, around 66% population of India, 66% population of India engage in agriculture. Okay, so world की 50% population depends on agriculture, but in case of India, this dependency is more. Okay, so in case of India, around 66% population is engaged in the agriculture. Got it? Now, for doing the agriculture, two things are most important. एग्रीकल्चर करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं. Okay, and what are these things? Favorable topography, soil and climate are vital for doing agriculture. ठीक है, so favorable topography and soil and climate are vital for doing agriculture. So agriculture करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फेवरेबल टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मतलब जमीन कैसी है. ठीक है, सो एग्रीकल्चर सबसे आसानी से कहाँ होगा? माउंटेनियस रीजन में होगा, उबड़ खाबड़ जमीन पर होगा या प्लेन पर. ठीक है, सो टोपोग्राफी मीन्स जमीन कैसी है, ढलान ज्यादा है, स्लोप है, whether it is a steep slope or it is a plain land. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सबसे अच्छा कहाँ होगा? प्लेन लैंड में, जो समतल जमीन है, समतल जमीन वाले इलाके में एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता है. ठीक है, देन सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल. जमीन तो समतल है, प्लेन कर लिया, परंतु सॉइल अच्छी नहीं है. सो द सॉइल मस्ट बी एलुवियल सॉइल which contains all the natural nutrients which are required for the production of good crops. Okay, so वो सारे minerals और nutrients soil में present होना चाहिए. Okay, so it depends on the topography, what type of land it is, then it depends on soil and most important climate. Okay, that is the reason that all types of crops could not be grown in a one single area or region. ठीक है, क्लाइमेट का एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है. ओके, सो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर. दैट इज द रीजन. ठीक है, यही एक कारण है कि हर प्रकार की क्रॉप किसी एक एरिया में डेवलप या ग्रो नहीं की जा सकती. ठीक है, सो द ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स could not be grown. I am again repeating, all types of crops could not be grown in one single area or region. किसी एक इलाके में सारी क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रॉप्स के लिए, हर एक क्रॉप के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं? डिफरेंट हैं. ओके, सो इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन. गॉट इट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज arable land. A, B, C, D, E and F. Okay,
So the land suitable for the land suitable for agriculture. I am again repeating, the land suitable for agriculture is known as arable land. Okay, so the land suitable for agriculture is known as arable land. एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड सूटेबल है, ठीक है, इन्हें ऐसी खेती की जमीन या ऐसी जमीन जिस पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर से सेंस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, तो ऐसी जमीन जिस पर फसल लगाई जा सकती है या फसल लगाई जाती है, फसल उगाई जाती है, ओके, दैट इज नोन एज व्हाट एरेबल लैंड। इसको बहुत ध्यान से लर्न कर लेना, ओके। व्हाट इज एरेबल लैंड? द लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और द लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज नोन एज arable land. Okay beta, so that's all for today's class, because in this room the next teacher is supposed to come and do the arrangement for his next class. Okay, so we'll meet again, okay, on Monday, and we'll continue this chapter and the topics. So that's all for today, students. Thank you. Goodbye.